Assalamu alaikum everyone. This is Ammaar bin Saleem. Welcome to another episode 6 of Out Loud with Ammaar. Today we have a very special guest और मुझे नहीं लगता उनको मुझे किसी भी तरह से जो है इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। आप इनको सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि ज़ैनिथ को जो है बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का नाम नेशनली इंटरनेशनल रोशन करने वाली चंद खवातीन में से ज़ैनिथ भी हैं और पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाने वाली पहली खातून मोटर बाइक पे ज़ेनिथ इरफान हमारे साथ हैं। ज़ेनिथ बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए हमें। Thank you so much, Amar, and I'm so happy to be here and to talk to you about my adventures. एग्जैक्टली थैंक यू सो मच वंस अगेन। ज़ेनिथ स्टार्ट करता हूँ आपके अर्ली चाइल्डहुड से। यू आर फ्रॉम लाहौर, व्हाट अबाउट योर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाउ वाज दैट लाइक? I am from Lahore, yes, but I'm not a पक्का लाहौरी जिसे जिसे कहते हैं ना कि वो लाहौरी जिसे सब कुछ पता होता है कि हाँ हाँ। प्रॉपर खाना कहाँ से मिलता है हर गली से। मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ एंड उसकी रीजन ये है because I was born in UAE. I was ओके। raised and born in Sharjah. So अच्छा। my entire upbringing is from the Middle East, and I wasn't aware of, how it's like to be a Lahori or like a Pakistani. So when I came to, when I came back to Pakistan for my education, I had to come back because my mother thought it's the best decision for all of us, like both my brother and I, to come back and study our O and A levels from Pakistan and not the UAE. And so when I came back, of Both course, before your O levels. yeah, exactly. So like जो O and A levels है वो मैंने इधर से किया है. But my primary schooling, secondary schooling is from Sharjah, and it was with Indians and of course with Hmm. European students, and I was like exposed to very diverse background. I'm like from a very young age. जब आप बड़े हो रहे होते हो, I had friends from Kenya. I remember I had a best friend from there, and I had another friend from Mumbai. So it was a very nice environment. I really liked it. I really liked being there, in that क्योंकि आप बहुत सीख रहे होते हो. But when I came to Pakistan, मुझे realize हुआ कि मैं कितनी बर्गर हूँ और मुझे तो कुछ भी नहीं पता अपने मुल्क के बारे में. इस्लामाबाद तो नहीं चले गए? Like even as an overseas Pakistani, क्योंकि मेरी उर्दू इतनी कमजोर थी, अब तो काफी बेहतर हो गई है इतने साल. अब तो 13+ years हो गए मुझे इधर. तो उर्दू बहुत कमजोर थी एंड मुझे समझ नहीं आती थी कि लोग ज्यादा लाइक आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बट यहाँ पे ना यूजली लोग इनडायरेक्ट होते हैं. अगर काम निकालना होता है तो इनडायरेक्टली बात करते हैं. तो आई हैड टू अडेप्ट टू दैट एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इट वाज वेरी डिप्रेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस एज अ फैमिली टू एडजस्ट to the environment over here because आपको नहीं पता होता. Your father and your mother, all of the whole family shifted to Pakistan. Yes, actually, if you really go back during the 1950s, my grandmother, मेरी जो नानी थी, she migrated Oh. from Pakistan to UAE because she was a gynecologist, and Hmm. she saw an ad that they were asking for gynecologist in the Middle East. और Okay. उससे कहीं बहुत कम infrastructure नहीं था ज़्यादा. It was more like a desert. They were just developing, just starting to develop. So my grandmother, there was only one ship that was leaving. She took Wow. that ship and alone at the age of 24, she went from Pakistan to the UAE. एंड वहां पे जब वो गई है तो उन्होंने प्रॉपर अपना इस्टेब्लिश किया क्लिनिक हॉस्पिटल. अपना खुद उन्होंने वहां पर एक सेटअप किया एंड शी अर्न अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज दे वर नॉट मेनी फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट बैक देन. एंड शी अ लॉट ऑफ पीपल जो अभी आप शेख हैं, जैसे जो शारजा का शेख है, शेख सुल्तान, उसकी इंटायर फैमिली को मेरी नानी ने हेल्प किया, ऑल द मदर्स टू डिलीवर बेबीज. She had a very Wow. close contact with all the sheikhs there. Exactly. So I I was think you have a exposed to family of even that extraordinary women. background. Sorry? I think you have a family of extraordinary women. Yes, I do. And even my daddy is like that. Like my daddy, one of the most craziest thing about my daddy is that, she fell in love with somebody and she, during those times, had a love marriage with that person, my age dada, of course. And when I hear this, I'm like, wow. Because, like it's अभी तो इतना common हो गया, लेकिन this is back in those days जब थोड़ा सा taboo होता था, कि oh, Uh, इसने अपनी पसंद से की है. And my daddy was also a gynecologist. Both were, and they both were working women, both established their own setups. Like so many. You're right when you say that. In my family there's a lot of elements of women empowerment. तो yeah. इसलिए like all of my family जो मेरी जो नान पूरे जो नानके हैं, they all of them were established in the UAE
for a very long time since the काफी साल हो गए हैं अब तो. We still have a house there. लेकिन since my mother was a single mother, um, so you know, I'll also stitch another part of the story that's missing is that Go ahead. कि जो मेरी अम्मी थी, she came back to Pakistan to get married. उनको Okay. एक रिश्ता मिला था, and my father was a doctor in the army. He was in 9 Army Aviation. तो Okay. उस शादी करने के लिए, you know, like she came over here, and when she got pregnant, तो वो वापस UAE चली गई just so that she can give birth to us in UAE. उनका एक decision था कि नहीं मेरे ठीक है. बच्चों ने उधर होना है. हम्म. And of course, when she went back, and then she used to just like travel to and fro, you know, to both UAE and Pakistan. So when my father passed away at the age of 34, you know, it was a sudden heart attack. He was posted वो कहीं I think it was near Naran, मुझे जो बताया जाता है कि वहाँ पर उनके कोई काफी hard area में posting भी होती थी. Okay. And उस वक्त he suffered a heart attack and was a very sudden shock to the entire family because Beat एक it. ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा you know like he's in the army, you're fit. It's not like a Yes. unhealthy lifestyle मैं जी यही रहे सोच हो. रहा था कि आर्मी So के अंदर हमारे दिमाग में yeah, ऑटोमेटिक इमेज आता है कि यार फिजिकली फिट होंगे, हर वक्त एक्टिव होंगे, yes, मतलब you don't expect somebody going that soon. that because he was like that, you know, वो काफी physically fit थे, but I don't know what happened and he suddenly passed away. So मेरी अम्मी वापस आ गई थी मेरे पास, फिर of course हुई अपनी नानी के पास थी. फिर हम लोग सब जब मैं तकरीबन 13 years of age की हुई, that's when I shifted to over here Pakistan लाहौर में. तो of course ये बहुत ही अजीब था, मैं adjust नहीं कर सकती थी. I used to hate Pakistan. अब तो मैं पसंद करती हूँ because of my riding, but I would hate everything because मुझे समझ नहीं आती थी. लाइट बहुत जाती थी उन दिनों में, 2008, 9, 10 की बात है, Oh लाइट काफी yes, जाया लोड करती थी. शेडिंग उस वक्त ही तो ये वो स्टार्ट हुई वाली थी, बात वो है. सही राइस पे थी, मुझे याद है. हाँ, I remember लाइट that. बहुत जाती थी. अब तो नहीं जाती है. I'm very surprised with the progress we've done, so you know, past few years में. लेकिन मैं उसकी बात कर रही हूँ, हालात भी काफी, वो टेररिस्ट अटैक्स भी होते थे, बॉम्ब ब्लास्ट होते Exactly. थे उन दिनों में, मुझे याद है. And so yeah, that was the entire, you know, little bit background. That's some very mixed background से Then आती at हूँ. that time you started your O levels. So where did you do your O levels from in Lahore? I did it from Lahore Learning Campus. It was a Lahore small learning now. school Okay. campus. वहाँ LLC से मैंने किया था. And then for my A levels, I went to KIMS, Kenyan Institute of Management and Sciences. बिल्कुल वो And वहाँ से वहाँ पे वो जौहर टाउन में होता था उस वक्त किम्स. अब yes, मेरे ख्याल है वो और गुलबर्ग वहाँ में का आ भी गया. alumni बहुत strong है. वहाँ का alumni is very, बहुत बच्चे निकले हैं वहाँ से that have done their, I think in the media also. If I'm not wrong, Farhan Said studied from KIMS too. I think so. मुझे जो याद आ रहा है. So yeah, KIMS से मैंने पढ़ाई की. Then I had a, you know, I had to choose between universities, and then I went to LSC, Lahore, Yeah. of course, School of Economics for my bachelor's in marketing and finance. ऐसे लाहौर और एलएसी में जोड़ कैसा रहा, जगह. मतलब कितना फर्क था ए लेवल से जहाँ से किया था और एलएसी में जाना? डू यू थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन या कैसा था ओवरऑल? Yeah. Actually, it might look like I might be a very popular person if I was in LSC because you know my ride career. I would be the only girl coming to the university on a motorcycle, so everyone would know me through that. Ki, the girl that comes on the bike. Oh yeah, there's this girl who comes on the motorcycle, and I was actually the opposite to how I am on social media. मैं एक introvert थी. I wouldn't talk to a lot of people. I wouldn't hang out. Usually LSC में बच्चे जो आ जाते थे breaks पे ना बाहर चले जाते थे किसी बाहर चल restaurant जाए. में. I wouldn't do that, and I would just वहाँ पे stay वो थोड़ा room पे आपको थोड़ा सा set. डिस्टेंस पे जाना पड़ता है बिकॉज एलएसी उस टाइम पे तो काफी दूर लगता था. दूर लगता था. वहां में ज्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ काफी ज्यादा रेस्टोरेंट्स खुल गए थे बरकी रोड पर. फिर हाँ बाद में जाके काफी ज्यादा रेस्टोरेंट्स खुलेंगे. यस, आई अग्री. एंड वहां पर यूजुअली क्या हो रहा था दैट even my class fellows had no idea what I do. Like they had no clue I had a passion for riding motorcycles. It was only later on that they realized when they saw me coming on the, you know, to campus on my motorcycle, and then my professors recognized कि oh she does do this. But उनको अभी भी ये नहीं पता था that I actually go to the mountains also. Like उनको आइडिया नहीं था. So अच्छा I think मैं something थोड़ा सा happened. हो गया कि मतलब एलएसी पे बाइक पे जाना, एंड आई कैन से बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई एम आल्सो फ्रॉम एलएसी. मुझे पता है कि वो बाइक पे जाना बहुत थका देता था बंदे को. तो क्या घर पास Yeah. था, जाना आसान था या दूर था घर, किस तरह से मैनेज होता था सारा?
नहीं, आसान नहीं था क्योंकि मेरी जो पहली बाइक थी ना वो 5 जनवरी 2013 को आई थी और मैं एलएससी गई थी 2014 सितंबर 2014 में मेरी फर्स्ट सेमेस्टर था. So ओके. it wasn't easy because basically the whole story was that I was facing a lot of problems in terms of commute. मुझे हम्म. issues हो रहे थे कि यार जाना कैसे है उन दिनों में. Uber, Careem and this अब तो InDrive भी है ये भी है वो नहीं हो रहा था. मतलब आप सोच ही नहीं रिक्शे सकते थे. वगैरह या बहुत ज्यादा था एंड रिक्शा वाला बहुत पैसा भी लेते थे they would और फिर वहां ask जाके you for a लड़ाई भी lot of करते थे. money. Yes, बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे एंड इसलिए जब मैंने ओ एंड ए लेवल्स ऐसे गुजार दिया जब वैन में जा जाकर. So that's when we had an idea to buy a small motorcycle. तो छोटी सी बाइक ली 2013 में 70 ओके. सीसी की होंडा की. फिर मेरी 70 अम्मी ने सीसी मेरे होंडा, पापा यानी वो को योर दे फर्स्ट बाइक वाज 70 सीसी होंडा. Yes, the first motorcycle I had. मैं तो होंडा ही And लेता then हूँ. my mother encouraged me, my brother, to teach me how to ride. And since I live in Kent, it was easy for me to learn over here. ज़्यादा लोग नहीं होते ना Kent में. थोड़ा सा it's like nice and spacious roads. And that's how I started learning how to ride back in 2013 when I was around 17, 18 years. I was 17. Yes, I was 17, I remember. अच्छा, मतलब 18 के होने your वाली थी. brother actually helped you learn how to ride. My brother, yes, and he was also very young. He was 16, I think. वो भी How बहुत छोटा था. fascinating. मैं मतलब हम दोनों. नॉर्मली तो यही होता है कि उन्हें लड़कों से ही आता है, नहीं यार ये नहीं करना काम, ये वाला काम मेरी बहन ये काम नहीं करेगी. मैंने वही कहा ना मेरे क्योंकि हम लोगों की इवन माय मॉम वाज लाइक हम लोगों की बाहर परवरिश हुई तो वी डिडंट थिंक कि कुछ हम्म. गलत है. हम्म. Because in my mother's concept was that it's just bike, इससे कोई bias does the gender come in over here. So हम्म. my mother did not think like this कि ओ अच्छा you're not supposed to be riding. वो हमारी आसानी देख रही थी कि हम्म. यार ये आसान चीज है. It's cheap, it's very like cost effective है and फिर. she can commute. कल को next year से यूनिवर्सिटी जाना है. तो हम्म. जो पूरा ईयर था 2013 का उसमें मैंने सिर्फ मोटरसाइकिल चलाई इन लाहौर. आहिस्ता आहिस्ता चीजें गुजरी मेरी ना थोड़ा सा कभी यहाँ चली गई कभी वहां चली गई. तो that's how I actually started riding properly in the city. I started एंड फिर जब एलएससी में गई हूँ तो तब तक भी मैं पहले सेमेस्टर तो मैं बस में गई हूँ. दूसरा जो सेमेस्टर था दैट आई वेंट ऑन अ मोटरसाइकिल क्योंकि मैं इतनी डरती थी. बड़की रोड से मुझे बड़ा डर लगता था कि आज भी उसमें काफी डर लगता है. एक्सीडेंट्स भी होते हैं. एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं वहां पर. बहुत ज्यादा. हर अब दो पता दो नहीं मिनट उतने बाद होते हैं मैं कि नहीं, देखती हूँ. लेकिन मुझे याद है जब हम भी एलएसी में थे, मतलब हमारे वैसे हमें हाँ टू स्केयर अस ऑफ के यार इधर से ना आना या स्पीड कम रख के आना, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स हुए और बड़े हाँ. लीगल एक्सीडेंट्स हुए वहाँ पे. यस प्रॉपर एक्सीडेंट्स होते थे. मुझे बड़ा डर लगता था. पहली दफा तो मेरा भाई मेरे पीछे बैठ के बाइक पर गया है ताकि मुझे सिखाए कि कुछ हो ना जाए. एंड देन दूसरी दफा मेरा जो भाई थे वो दूसरी बाइक पे था मैं दूसरी बाइक पे थी मुझे लेकर गया. तो इट्स ये पूरा होता रहा. हम्म. But we never knew that all of these small things that are happening now would turn out to be like a proper national and international story one day. None of एग्जैक्टली. us knew. मतलब अच्छा, मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन Mm. ये होने वाला था कि ये कब डिसाइड किया कि यार मैंने अब इस चीज को प्रोफेशनली Yeah. लेके जाना है. मतलब वो तो मतलब इट केम आउट ऑफ नीड, यू नीडेड टू यूज इट, यू यूज्ड इट, योर फैमिली सपोर्टेड यू. प्रोफेशनल Yeah. मोटर बाइक चलाना इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट. ये पहाड़ों में जाने वाला, ये कैसे डिसाइड किया कि यार ये भी करना है? Well, as I was mentioning in my story earlier, that how about my father, passing away, you might be noticing that it's only three हम्म. of us. हम लोग की nuclear family है, और my mother, me, my brother, all of us are very close to one another. हम्म. So of course, the father figure, वो नहीं थी. And हम्म. even though my mother has done an amazing job in raising us and never, making us feel that space exists. Of राइट. course, I was curious to know who my father was. एक curiosity होती है कि आपके वाइफ साहब कैसे हैं. And like, I don't know if you can see. There's also a picture over there. यस That's my यस, वन ऑन द टॉप. that was when my father actually, like, let me just show you. या. That's actually the age when he passed away. It was this माय age. गॉड. So he was very young and I was only 10 months of age, like ऐसा scene था. तो of course मुझे कोई idea नहीं था. My mother was pregnant at the Sultan and it was like, of course we're not aware who our father is. And that's when I found out about him was that he wanted to ride, all across the world and live a very gypsy lifestyle. He wanted to be somebody who's carefree and he's not, एक होता है ना वो जो बंदे होते हैं वो जो थोड़ा सा कहते हैं कि यार मैंने अपनी अपनी लाइफ अपनी
हैप्पी गो तरीके से लकी। जीनी है। यस, उस टाइप ऑफ बंदे थे, लेकिन वो ऐसे नहीं थे ना, वो ऑपोजिट फील्ड में चले गए, आर्मी। हाँ वो तो आर्मी इज लाइक द टोटल ऑपोजिट टू दैट, वो एक वही मेरे ऐसी दिमाग चीज में में साथ चले साथ जब गए। मैंने कहा अच्छा हैप्पी गो लकी या थे, सारा कुछ करना था, तो आर्मी में कैसे चले गए? यू हैव टू लिव अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ ओवर देयर। yes, you have to, and even though he was a disciplined person, eventually he had to become one because of being there. But still, there's a part of you that's always like, I want to do this. You know, you have this या particular aim and goal in your life, even if you have like a 9 to 5 job. And this was his goal, to travel the world. So when I found out about this dream, that one thing that came into my mind was that, I wonder if, I could do this for him. Like, I wonder if I will be able to. And also that, I don't think dreams die. एक होता है, मुझे नहीं लगता, अब मैं हर interview में ये कहती हूँ, in every interview that I've done, is that I don't believe that if a person passes away, that their dreams die with them. I think we can be torchbearers to those dreams, as children or as friends. अगर आपके किसी दोस्त का भी कोई dream है, and that person was also able to do so, I think we can do it, for them. And you never know. I never knew in in trying to breathe life into his dream, I would be able to find mine too. क्योंकि एक तो था ना कि ठीक है, बाइक आप चला रहे हो, आप सिटी में चला रहे हो, ठीक है। और बैक इन 2013 में बहुत कम लड़कियां चला रही थी। आई थिंक आई ओनली न्यू 1 or 2 girls who were riding। मतलब बहुत अभी कम तो थी, आपको अब तो बहुत ज्यादा बहुत लोग ज्यादा नजर हो आते गई हैं इस हैं। लोगों पे, एंड यू हाँ, आर वेरी अब तो हैप्पी। बहुत ज्यादा है। उस टाइम पे तो मैं सोच भी नहीं सकता कि लड़कियां बाइक चला रही हूँ। अब तो बहुत ज्यादा है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि लड़कियां कर रही हैं, बिकॉज आई नो हाउ इजी इट इज फॉर अ वुमेन टू बी इंडिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू कम्यूट एंड मोबिलिटी। तो अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट बैक इन दोस डेज, एक बहुत नया फॉरेन चीज थी हर किसी के लिए, व्हिच इज ऑन अ मोटरसाइकिल। So the idea of actually going to the trip came because when I first started riding, I that dream of my father got triggered. I was, it थोड़ा सा recall हुआ, there was a या recap thing going on in my mind that, oh, if he want to do this on a bike, maybe one day I will be able to do so. लेकिन अभी भी कोई आइडिया नहीं था कैसे करना है, क्या करेंगे। तो इसलिए what happened was that I would be studying, मैं पढ़ भी रही थी, लेकिन मैं साथ साथ क्या करती थी कि मैं ऑनलाइन मोटरसाइकिल कम्युनिटीज देखती रहती थी। अच्छा, ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हुए थे। आई वाज लाइक अ साइलेंट मेंबर ओवर देयर, लाइक एंड इन देयर वाज दिस वन पाकिस्तान में पर्सन। ही? यस, इन पाकिस्तान। ओके ओके। इन पाकिस्तान। And during one, I think एक दिन मैंने I saw this guy. He commented on some of my comment. उसका reply कोई आया था, and he was on a motorcycle. I saw his DP, and this person's name is Sanan. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अब, and he was on a motorcycle in the mountain somewhere, if I recall. And I was like, I immediately texted him and said that, oh my God, how do you do this? Like, I was very intrigued by that. ना तो वहाँ या से conversation start हुई। फिर मैंने उसको बताया कि I want to do this. Can you help me out? And can you मुझे मदद करो? What should I do? What, like, how do you prepare and all that stuff? या And he asked me, what's the bike hai? And I was like, it's a 70cc. He's like, you might need a bigger bike because it's very small for you. But I was so passionate that I was like, मैं 70 में भी कर लूंगी। Like, please, मुझे करना है। Like, इतनी passionate थी। I was really crazy. And that's how, that conversation started. And then he introduced me to people who were actually in motorcycle adventure, into motorcycle touring. या And during that networking, I met another person called Adnan bhai hai jo, and he was actually the real person behind my entire story, who, if I have to give credit to, is him, जिनको मैं अपना mentor मानती हूँ। He's like the proper person who actually showed me how to go about these things. And he devised, like, basically, in the beginning I was very skeptical, because जब आप biking community में होते हो, or even if it's a general thing, as a woman you're like, what does this person want, इसका ulterior motive क्या होगा if this person's helping me. And this person, अनान भाई जो थे, ट्रू उनको ना मेरे वालिद साहब का dream पता चला था through conversations happening कि, oh, this is this one young girl and she keeps on talking about going to north and she wants to go. So when he offered help and assistance, I was like, what does this person want? Because, अक्सर आपको होता है कि यार इंसान की तरह इसको कुछ मेरे से नहीं क्या होता चाहिए, इस ऐसा। बंदे को मेरे से क्या चाहिए, क्यों ऐसे कर? Yes, एंड स्पेशली व्हेन यू आर and दैट यंग यार, मतलब अब तो थिंग्स I मे was हैव चेंज्ड 20, विद जस्ट 19, 20। I think, if I'm not wrong, 19 or 20 थी। I was very young, and इसलिए I was like, what this person wants. But of course, when he met my mom, he met Sultan.
he devised a strategy for me and I was able to trust him क्योंकि आप उसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलते हो, you're not like all of a sudden saying हाँ मुझे जाना है. Right. And उसने ये था कि he told me कि आप ना एटलीस्ट पिंडी तक 70 सीसी पे आपने जाना है वो ऑन जीटी रोड. तो मुझे याद है GT कि roads. मैं निकली थी यहाँ से 7 बजे, सुबह के 7 बजे हम लोग निकले थे. पूरी सुबह हम लोगों ने जीटी रोड की एंड 11 घंटे मुझे लग गए. तो आई थिंक आई रीच रात को मैं रीच किया आई थिंक अराउंड मगरिब टाइम. सो एज यू कैन सी इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम मतलब बिकॉज मैं सुबह 60 7 बजे स्पीड पे चले जा रही लाहौर थी. से थ्रू जीटी रोड यस और रात को 11 रात को मगरिब के वक्त पहुंचे रावलपिंडी ऑन अ 70 सीसी मोटर बाइक. yes and it was very difficult for me. मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि ये तो क्या है. I thought it's going to be all fun and games but it actually was not fun and games. My back was like totally gone. My hands would ache because when you're pushing the throttle आपका ये palm बहुत ache करता है if you're not used to it. Or Yes. your entire body collapses because it's not a very comfortable bike. It's not really fast. It's So not it took me meant a very for, I long think, time. intercity travel. Yes, it's not meant for it, but we are people like me take it because हाँ, we're मतलब so पैशनेट crazy. लोगों ने तो ऐसे ही लेके जाना है ना. हाँ. और अभी भी कुछ लड़के हैं जो गुजरात तक गए हुए हैं 70 पे. वो जाते हैं इतने ऊपर मतलब नॉर्थ ऊपर 16,000 फीट तक ले गए हैं लड़के. मैंने उनको देखा भी था and I was very shocked. I think it's all about passion. No, honestly, it's not even the fact that you don't have a bigger motorcycle. And Hmm. that was like a huge shock to my entire system, my mind, everything. And I also had to face my fear. Okay, there are trucks that are coming, and what if they smash me? Itni सी bike है. And what's going to happen. And वो चीज मैंने वो सारी जो चीजें थी मैंने उनको properly face किया. And then उसके बाद fast forward few मैं वापस आ गई. We did all this small little trip. And then on the 14th of August we took the decision to go to north. And उसके लिए he gave me a small motorcycle. वो भी एक छोटी बाइक है 125 cc. So a lot of pictures that you might see me on a 125 cc वो actually उनकी है. एंड वो अच्छा. अदनान भाई Okay. की है, उन्होंने मुझे बोरो करवाई थी. एंड उसके बाद जो मेरा भाई था ही हैड अनदर मोटरसाइकिल 150 थी. मेरा भाई भी मेरे साथ accompanied. He also accompanied me on this Okay. trip. And a lot of people think I did it solo, but I actually did not. Proper a group tha, like me, my brother, and we all went on. We were on separate bikes, but we were there, and that's how we did that trip, which went viral because I posted it online, so it got viral from there. ओके. सो ये सारी स्टोरी थी मतलब वायरल होने की. एंड मतलब आई कैन ओनली इमेजिन यार, मतलब 70 सीसी पे फिर जाना. एंड मतलब 70 सीसी पे मैं आज मेरे को कहना यहाँ से एलएसी जाओ तो मतलब आई कैन टेल कि मैं कितना थक जाऊंगा तब तक पहुंचते पहुंचते. सो Yes. 70 सीसी पे रावलपिंडी तक जाना एंड देन फिर 1 to 5 का सफर, मतलब दैट्स क्वाइट फैसिनेटिंग. मुझे समझ भी आ रहा है कि मतलब हाउ पैशनेट वन हैज टू बी इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट यू रियलाइजिंग योर ड्रीम. And it was actually your Yeah. father's dream, जैसे आपने बताया, which you wanted to live. Yes, I actually really wanted to travel and I wanted to connect with my father in a way that was very, very different. And that is why I took that trip. And one good thing I did was that, my mother had always encouraged me to write. मतलब बचपन से कहती थी डायरी लिखो, पूरे दिन क्या हुआ डायरी लिखो. तो उनकी ये एक मशवरा था कि जस्ट ओपन अप अ पेज और उसके अंदर अपनी पिक्चर्स अपलोड करके ना अपनी डायरी लिखो कि तुमने ये क्या 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 किया. And when I did that, somebody picked up from there. I think it was a news agency, and that's how it got really viral from that particular page that I had opened. Exactly. And I think it's important to publicize yourself. I have to deliver a keynote right after this meeting of ours. And while preparing for it, again, I came across this point and realized how important it is to publicize yourself. If you are really good at something, or if you're really Yeah. passionate about something, let the world know. And I think you did that, Yeah. and it paid off. Yes, definitely. It did pay off. I would never know but I never knew ये होगा. It was just I think लिखा हुआ था कि ऐसे मतलब होना है. कौन सोच सकते हैं. नहीं, बट ब्रिलियंट. अच्छा देन एक काइंड ऑफ अ फूलिश क्वेश्चन लगता है. मतलब नाउ यू ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, Yeah. लेकिन कौन कौन सी मेजर मेजर जगह जो है आज तक याद है कि यार जब पहली दफा मैं कह रही थी, मुझे याद है कि यार ये सब इलाके में फिरी थी. और पहली दफा तो हम लोग इस्लामाबाद से हम लोग पहले नारायण वगैरह गए. वो पहली दफा बाइक पे देखा.
बाबूसर टॉप पहली दफा मोटरसाइकिल के ऊपर देखा, सारे जो एरियाज हैं इनको मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बाइक के ऊपर किया। और देन ये वन उसके टू बाद फाइव पे आप गए ट्रिप थे पे मैंने इस्लामाबाद से चढ़ा। नारायण वाला? यस, ये हाँ। 1 to 5। इट वाज द फर्स्ट ट्रिप जो था 1 to 5 पे था। इट वाज लाइक 3,200 किलोमीटर मिलाकर जब हमने कैलकुलेशंस की, वो 3,200 किलोमीटर था। और हम्म। उसके बाद जैसे बाबूसर टॉप है वहां पे बाइक चल ही नहीं रही है, रुक बंद हो रही है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, लाइक एयर कूल्ड मोटरसाइकिल है, तो इसलिए बहुत टाइम लग रहा है उसको, जाते हुए और ऊपर उसको स्पीड क्या धीरे होती से है कर रही उस है। पे ऊपर इतनी ऊंचाई पे जाते हुए? स्पीड क्या होती है, मतलब क्या होगी? barely 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपको धीरे धीरे इतनी धीरे ज्यादा? चलाना होता है। एंड इतना कम ऊपर चढ़ रही होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स टेकिंग लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम्म। बहुत ज्यादा पेट्रोल भी खा रही होती है मोटरसाइकिल, तो वो समझ, अभी अभी उस पे भी चढ़ाना एक चैलेंज था, बाबू से टॉप पे, मुझे याद है फर्स्ट टाइम वाज लाइक आई डोंट नो ये तो चढ़ेगी भी नहीं, मुझे तो ऐसा हाँ। लग रहा था, बट इवेंचुअली वो कर लिया। एंड आई एक्सप्लोर्ड लाइक वी वेंट टू रायकोट ब्रिज से, फिर हम लोग गए थे सकर्दू वाली साइड, अस्तोर, रामा वैली, कुछ एरिया है, देवसई गए हम लोग उसके बाद आगे भी गए थे, हम लोग शिगर वैली गए, काफी एरिया से हमने बल्तिस्तान की घूमी। फिर हम ओके। गिलगित गए, जब गिलगित में हमने हुंजा, गुजरात, and of course all the other areas like Pasukals, and we also went to a very very underrated village called Nisgar. When you go to Punjab, there is a road that goes towards your left. I still remember, and वो जो रोड है वो मिसगर वैली तक जाता है। एक वैली मिसगर है, एक चुपरसन है। चुपरसन ओके पहले पर्सन। आती है, थोड़ी थोड़ी देर तक मिसगर आती है। ओके। हमें जाना दोनों में था, लेकिन हम मिसगर में गए, वो बहुत खूबसूरत था। I think it's a very beautiful village. I want to go there again. I feel like I should go there again. और फिर उसके बाद like I was exploring so much of Pakistan, but I was unaware कि I'm doing a lot, like, because आप लोग you're so much in the present that you kind of forget that what you're actually doing and the impact it's going to have in the future. Like, with me getting viral and then encouraging mobility nationally, as a motorcycle girl now of Pakistan, yeah. यहाँ एग्जैक्टली मोटरसाइकिल गर्ल ऑफ पाकिस्तान। Exactly. So it was pretty crazy. इट मस्ट बी। अच्छा जेनिथ, इन सारी जगहों पे जाते हुए सबसे ज्यादा खौफ कहाँ पे है? वो कौन सा पार्ट है सबसे ज्यादा डर लगा यार, इस काम में फंस गई हूँ, ये क्या ले लिया मैंने? कभी ऐसा कोई मोमेंट आया था? Um, I think it was I अगले साल ना, लास्ट उसके अगले साल 2016 में, 2016 में आई मेट एन एक्सीडेंट, आई डिड अनदर ट्रिप एक्चुअली। तो फिर उसके बाद वी वुड ऑलवेज डू ट्रिप्स, जब भी मुझे ब्रेक मिलती थी फ्रॉम एलएससी, आई वुड हम्म। जस्ट गो ऑन अ ब्रेक, एंड मैं टू मतलब मंथ ट्रिप्स की होते ब्रेक थे भी कर ली, कंबाइंड, वन सबके मंथ साथ की। होते थे? यस, ओके यस। ठीक है ठीक तो फिर जब मैं फिर उस ब्रेक में भी मैं गई थी टू खैबर पख्तूनख्वा, तो इस दफा हमने फोकस किया था कि हम कैलाश चित्राल करें, लेकिन हम कैलाश नहीं कर सके थे। कैलाश में 2019 में किया था। ओके। फिर वहां गई थी चित्राल, भूनी, काकोच, बस तो शंदूर पोलो ग्राउंड जो है आपका, ये वाले हम्म। हमने बेल्ट की थी। वाह। एंड वहां से फिर हम गिलगित आए थे। सो देयर आर टू वेज यू कैन गो टू गिलगित, आइदर इट्स फ्रॉम चित्राल वाली साइड, लोअरी टनल पास भी आता है आपका, ठीक है लेकिन ठीक है। उन दिनों में लोअरी टनल नहीं बना हुआ था, उसमें सिर्फ रोड थी। दैट वाज यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। अब आई थिंक नहीं है, लेकिन तब अब तो टनल बन गई है। यस, मैं टनल से गुजरी भी हुई हूँ अब। उसके हम्म। अंदर भी वो लोग बाइक अलाउ नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि आपको बाइक किसी पिकअप में डाल के जानी पड़ेगी। लेकिन बैक उस वक्त तो इट वाज लाइक अ proper S type road. It was pretty scary. And in that particular trip, I met an accident near Gabral Valley. It's a valley that's very close to Kumrat, very close to Swatai region में आती है ये। ओके। And I fell in the river. So basically वो जो accident हुआ था, उसमें like I was going somewhere to this particular, हम लोग सबने कहा था हम जाएंगे। We had a guide who was forcing us to visit a lake, and then when on our way back अंधेरा हो चुका था, and I fell in the river. तो नीचे ना Oh एक, my there was God. a wooden bridge. Yeah, there was So, a so, so wooden you were bridge, going like a over a small. wooden bridge and then you fell in the river. Yes, because my tire slipped. क्योंकि वो सारे एरिया इज वेरी वेट एरिया ना, रिवर का पानी होता है, ग्लेशियर का पानी आ रहा होता है, मतलब इट्स नॉट ड्राई। कुछ एरियाज ड्राई होते हैं, but that particular area was like very slippery. And the next thing I knew, I was in the river and it was very cold. I think it was river का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा, जो पानी का टेम्परेचर था
It was very cold. And then our guide Hanif bhai, unhone phir, he jumped in the river and he pulled me out. Like, if he wouldn't have done that, so this small river was connecting to the bigger one. So I was lucky I fell in a small one. So pani wasn't really fast. Acha, but it was जो flowing water into a था, bigger river, or you would of have flown. course, it was fast enough for me to not be able to swim because I know how to swim, but you can't in the river. और जब It's आप गिरी so होगी उसके अंदर आपने कहा इतना होगा दैट इज इट मेरा काम तो हो गया. yes, that is when I knew that it can be this dangerous. If you don't take care, it can be this dangerous, and that's when I was able to understand the dangers of also riding. मतलब there's another side to it. तो I Hmm. think ये था कि मैं उस वक्त मैंने सोचा ये लव्स की oh my god मैंने अपना किस चीज में डाल दिया ये क्या है क्योंकि ये अब तक तो we were enjoying but now finally I had an accident. So of course I did not give up. Hanif took me to his house and uski he had two wives. Very surprisingly वो भी culture shock होता है for somebody in the city, very normal in Khyber Pakhtunkhwa. So Hmm. all both of his wives took care of me, his daughters took care of me. I मैंने 2 दिन का rest किया and I was back on my bike again. And And मतलब I had did no you suffer any injuries, injuries luckily. या वही मतलब पानी. No, I did not. यही तो बात थी. बचत हो It गई. was just a, it was बचत हो गई है, exactly. बहुत बुरी तरीके से हुई है, वरना मैं तो I could have hit my head on a rock or something. Yeah, exactly. It was मतलब रिवर possible. में गिरना फिर इतनी हाइट से गिरना एंड मतलब Yeah, बाइक बच गई. बाइक ऊपर ही थी ब्रिज के, मैं नीचे गिर गई थी. अच्छा बाइक ऊपर ही बाइक रही. ऊपर थी. हाँ, and I actually found there is actually a video of this also. It was recorded on my brother's GoPro, and you can see that video on my page. मैंने I think post किया है. I think मैं Yeah. आज ही देखूंगा ये वाली चीज. I think I missed, लेकिन now that you have said it, it's scary but it's fascinating at the same time. It's also very Yeah. realistic कि यार मतलब ये वाली चीज भी तो एक साइड है ना मतलब to whole There adventure is a yeah. of traveling. अच्छा लेकिन यानी मगर वैसे being a woman आपको कभी ये वाले problems नहीं आए कि यार मतलब जैसे कि मर्दों की तरफ से कोई problem आया हो, people who you went along with in your trip या people who you met with Yeah. over there, ऐसा मसला लेकिन नहीं आया. या आया. मुझे ज़्यादा ये मसला सिटी में होता है. Like in Lahore, like maybe like in bigger cities, because I think people over here are not as friendly as those that in the mountains. I think पहाड़ी लोग के जो लोग हैं पहाड़ पहाड़ के वो बहुत अच्छे होते हैं. They're not very like oh ये क्या कर रही है. Hmm. And contrary to popular belief, they are very very actually open-minded. You might think Hmm. that they might not be just because you're living in the mountains, but that doesn't mean ऐसी कोई बात नहीं है. They're very friendly, they're very hospitable, and वो आपको ऐसे नहीं कहते, oh, what are you doing? ये क्या कर रही है? They're very curious, I would say yes, curious होते हैं. तो एक जाहिर सी बात है, एक But like लड़की they बाइक ask पर आई है, questions and उनको all of देंगे that. adventure. A lot of them, small girls kind of like pinch me like this, like, oh my God, ये कोई real लड़की है या नहीं है? And they're very surprised to see you. And they of course look at your motorcycle, and not only for me, even for men. Even अगर लड़के travel कर रहे थे, for them also they see कि अच्छा यार मतलब ये tourist आए हैं, उनके लिए वो concept थोड़ा different होता है, and then they do not understand, some of them, especially in Khyber Pakhtunkhwa, is why are they traveling? मतलब what's the purpose of it? क्योंकि you have to understand कि traveling is a luxury to some extent, if it depends on the angle you look at it. Yeah, If yeah. you are if you're somebody from the city and you're traveling, for you, and you're from a upper middle class, तो आपके लिए luxury होगी. But for Mm-hmm. some it's a necessity, especially अगर वो एक nomads है and they are moving their cattle from one place to another. अगर आप जैसे देख रहे होते हो shepherds है, for them it's a Mm. necessity. It depends on how you're looking at it. लेकिन for most of them, they can't understand why they're traveling for luxury, क्योंकि उनके लिए just to feed a meal a day is difficult. It's challenging, and you're Of exposed course. to that income group. And ये वो पाकिस्तान है जो ज़्यादातर नहीं दिखाया जाता. Pakistan is Exactly. not only about Karachi, Islamabad, or Lahore, या LUMS, या LSE. Even being Yeah. I was, in a very privileged university, but that's not Pakistan. I think it's more of these people that अगर हमारे around 200 million लोग हैं, I think this barely 5% over here in these cities. बाकी सारे dispersed to these areas. So, Mm. of course, लोग बहुत ज़्यादा they are very very curious, very very, they ask you so many questions, and they want to know where you're from, and it's very nice, वो experience बहुत अच्छा होता है to teach somebody something new. I have done that in the past, लड़कियों को कुछ
थोड़ा सा सिखा दिया, maybe like if I'm there for like 4 days or 3 days, just intermingling with them, exposing them to a different environment of Pakistan. So yes, I've had good people, alhamdulillah, so far. जबरदस्त जबरदस्त बिल्कुल। और Yeah. नहीं, आपने मेरे ख्याल में भाई सही बात की है। आपको ये एक सर्टेन परसेंटेज है, मतलब देयर आर पीपल विद प्रिविलेज। आपको जब ज्यादा आप एक्सप्लोर करते हैं फिर आपको समझ आता है कि यार मुल्क में Hmm. और कौन कौन लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज। एज यू हैव मेंशनड, ट्रैवलिंग वुड बी लग्जरी फॉर अ सर्टेन स्ट्रैटा इन द सोसाइटी, बट इट्स नॉट पॉसिबल Yeah. फॉर एवरीवन। वो आपको जाके ही पता चलता है। अच्छा ज़ैनब, थोड़ा सा Yeah. ले आते, जैसे आपने भी कहा कि the problem that you actually faced in terms of how the society looked at you came from the people in the city. So what do you think कि हमारे यहाँ पे फीमेल बाइकर्स जो हैं उनको Hmm. सबसे बड़ा चैलेंज आ क्या रहा है? मेरे जब मैं यूनिवर्सिटी में था, आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर यार, आई हैड अ कपल ऑफ फीमेल फ्रेंड्स एंड उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन होता था, कमिंग टू यूनिवर्सिटी एंड गोइंग बैक होम। कभी रिक्शा आ रहा है, कभी बस आ रही, कभी नहीं आ रही, या और अगर वो आ भी रहे हैं, आई कुड टेल दैट दे वर पेइंग एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट्स। लेकिन इसके अलावा भी, मतलब बाय दैट टाइम आई रिमेंबर सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। सो व्हाट डू यू थिंक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? I think it's just mostly it's fear. And of course, it is something that's uncomfortable. क्योंकि अगर आप देखो, it's a very uncomfortable thing to be on a bike and be exposed to the external environment. And a lot of people like comfort. मतलब अगर आप देखो, people are very resistant to change. They don't like change. They want to be in their little bubble, and True. that uncomfortable experience comes with a lot of things like firstly us being in a patriarchal society. Then एक टाबू है, लड़कियां नहीं करी। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को देखो, तो पीपल हैव बीन एक्चुअली राइडिंग प्री जिया वाला जो आपका पीरियड है ऑफ पाकिस्तान, women were riding motorcycles. If you Mm-hmm. I've seen pictures from the archive of women were riding motorcycles in Pakistan, Yeah. and plus in Southeast Asia, motorcycle and especially a woman riding is very common. I have been to Nepal and I saw that या मतलब कि जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को ऑन स्कूटर लेके जा रही थी। इट वाज वेरी वेरी कॉमन। दे आर वेयरिंग अ साड़ी। मतलब दैट्स सो Wow. डिफिकल्ट। मैं ये देख रही थी कि That's इट्स लाइक अनबिलीवेबल। एंड मतलब अगर आप देखो, मलेशिया में लड़कियां चलाती हैं, इंडोनेशिया में चला रही हैं, पाकिस्तान में इसलिए इतना रेजिस्टेंस इसलिए भी होता है क्योंकि ज्यादा चला नहीं रही। एंड अगर आप निकलेंगे, इफ यू फाइट दैट बैरियर, दैट वॉल इन फ्रंट ऑफ यू, that's discouraging it from right, and head out to the roads, you will yeah. set an example for other women to come. तो वो एक fear है, वो basically they're actually fearful for how people will perceive, like cat call ना करें, कुछ Mm-hmm. harass ना करें, because Mm-hmm. automatically I don't know why. Even I face this also, कि automatically they connect your character to motorcycles. कि, oh, if she's riding motorcycles, she must be open to this, which is not true. But एक perception होता है कि she's riding bikes, so she's like roaming around and she's आवारा, ये आवारा होगी। तो वो एक हमें जो perception बनाई हुई है ना, इसको change करना is very important. And it's happening since I mean I try my best to do it in whatever capability I can, and I encourage other girls to pursue what they love, not only ride motorcycles, but fight whatever resistance they are facing in terms of anything they want to do what they love actually. It's not only Exactly. about motorcycles, yeah, exactly. ये तो वो वाली बात है सारी। बिल्कुल सही। Thank you so Sorry much, about Zenith. It my was नहीं, noise it was now. अब रश होने वाला है घर पे इसलिए। नहीं नहीं बिल्कुल सही। Thank you so much, Zenith, for taking time out, being with us. I really loved the discussion, and मेरा ख्याल है कि आपकी ये वाली बात जो है, many people should ना, खवातीन खास तौर से उनको घर से बाहर निकल के करना चाहिए, because अगर ये चेंज अब वन बाय वन आएगा तो ही ओवरऑल सोसाइटी में चेंज आ सकता है। Well, once again, thank you so Yes, much, yes. Zenith, and take good care of yourselves. And next week, to our audience, this message is that inshallah we'll be interviewing Miss Musarrat Misbah, who is the founder of the Deplex Foundation. So please make sure you're joining us there as well. Take care. Allah Hafiz.